औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को अपने चैनल फॉर्चून एजुकेशन पर वेलकम कहता हूँ। और आज का जो टॉपिक है ये इंटरेस्टिंग है कि जी सॉल्व मॉडल पेपर 2020 का पीपीएससी रिटन टेस्ट जो कि बीपीएस 17 पोस्ट के लिए एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में जो पेपर आया था वो आपके साथ सॉल्व पूरा कंप्लीट पेपर है। इसके दो हिस्से हैं, 50 एमसीक्यूज एक में डिस्कस किए हैं और फिर पार्ट 2 में 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि पेपर से पहले ये कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है और उसके अलावा जो है इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसका पेपर पैटर्न ये है या सिलेबस इसका ये है कि इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 80 मार्क्स के जो है ना आपके पास इंग्लिश रिलेटेड या सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं 80%। जनरल नॉलेज जिसमें आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ है, बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक मैथ्स है, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस है, उसके अलावा उर्दू है। आपके पास यहाँ से जितने जो है वो 20% मार्क्स बनते हैं और हर एक सवाल का एक नंबर है। और नेगेटिव मार्किंग अगर एक सवाल आप छोड़ते हैं या अगर एक सवाल आप गलत करते हैं तो आपको 0.5 जो है मार्क एक कटेगा और टोटल मार्क्स जो हैं आपके वो 100 हैं। और रिजल्ट अनाउंसमेंट जब आप पेपर दे के आते हैं तकरीबन विद इन 3 मंथ्स इसका जो रिजल्ट है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड हो जाता है। वहाँ से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जी आप मेरिट पे आए हैं या नहीं आए। तो देखते हैं जी ये सॉल्व पेपर इसका पूरा देखते हैं, आगाज़ करते हैं इस लेक्चर का। जो पहला पोर्शन है उसमें एमसीक्यूज़ हैं आपसे हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से मुतालिक जो भी उस पेपर में क्वेश्चंस आए थे। The story of Trojan War, a bloody conflict, is immortalized in Iliad by Virgil, Homer, Sophocles, or Alfred. The right answer for this we have is Homer. The story of the adventures of Ulysses is told by Homer in Odyssey, Iliad, Ulysses, Oedipus Rex. So the right answer we have is Odyssey. The legend of the Holy Grail forms the mythical background to T.S. Eliot's The Wasteland for quartets. The right is for quarters is not for quarter, it is four quarters. The love song of J. Alfred Prufrock. The right answer is The Wasteland. Northumbrian, Mercian, Kentish, and West Saxon were the four main dialects of English in Renaissance, the Old English period, or Age of Milton. The right answer is B. Which is the representative of poem of the Old English period? Iliad, Ulysses, Odysseus, Beowulf. The right answer is Ulysses. Pick the important poems of the Old English period: Widsith and Waldere, The Fight at Finnsburg, The Battle of Burnabur, और all of the above. ये सारी हैं जनाब, ये सारी जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोएम्स हैं। यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ Orosius by Alfred, Colloquian by Alfaric, and Homibek by Wolfian are the famous prose works of Renaissance Anglo-Saxon literature or 14th century literature. The right answer is Old English literature or Anglo-Saxon literature. अब क्लासिकल पोइट्री से कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्लासिकल पोइट्री से रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज हैं। Which literary aspect was dominating in the Middle English period? Prose, poetry, और both of the above? कौन सा जो लिटरेरी एस्पेक्ट है इन दोनों में वो डोमिनेंट था मिडल इंग्लिश के दौर में? तो जो पोइट्री है इट वाज डोमिनेटिंग इन मिडल सेंचुरीज। Northumbrian, Mercian, Kentish, and the West Saxon were the main dialects of Old English, Middle English, Modern English. Old English के main dialects थे। Who is the representative of the poem of the Old English poetry Beowulf, Harrowing of the Hell, और Paradise Lost? ए जवाब आपका ठीक है। Which dialect was adopted by Alfred? आंसर इसका बी है, लेकिन आंसर बी है कौन सा? मर्सियन, वेस्ट सेक्सन, कैंटिश। वेस्ट सेक्सन को अडॉप्ट किया था अल्फ्रेड ने। Which was the most popular literary form in the Old English? Epic, drama,
और नावल। एपिक जो है ये बहुत फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में, ओल्ड इंग्लिश में। Beowulf is a poem about adventures of Beowulf, social conditions, or both of these. So, adventures of Beowulf. Old English period is also called Middle English period, Anglo-Saxon या Renaissance. इसको सी Anglo-Saxons भी कहते हैं. The two important religious poets of Anglo-Saxon period were Cadman and Bede, Cadman and Cenwulf, Shelley and Keats. सही जवाब आपके पास है Cadman and Cenwulf. The Anglo-Saxon or Old English period in English literature extends roughly from 670 to 400, 1100 AD, 570 or 1000 to 15, 670 to 1100. ये किसी किताब में आपको 450 भी मिलेगा और उसके अलावा 570 भी कहीं पे मिलेगा, और लेकिन रफली जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए थे उनमें ऑप्शंस यही थे, इसके अलावा जो है एक चौथा ऑप्शन नन था, तो इसलिए रेलेवेंट जो है हमने इसको ए जवाब को जो है वो यहाँ पर लगा दिया. म्यूजिक एंड सॉन्ग वर द हीरोज आर्ट, and it is the continuation again, and a long phrase is there. The glee would rang a song approach when Hrothgar's scope gave the hall good cheer. Mention the name of the poet. ये किसने लिखा है? Beowulf, Homer, Chaucer. ये लिखा है Beowulf ने. रोमांटिक पोइट्री से कुछ पोर्शन है, कुछ क्वेश्चंस हैं. Point out the name of the ode of the Keats in which he has used love, ambition, and poesy as an allegorical figures. Ode to autumn, ode to nightingale, ode to indolence. सही जवाब है ode to indolence. Keats was born in 1900, 1795, 1799, 1794. पहले वाला जवाब पहले ही से डिलीट है क्योंकि रेलेवेंट ऑप्शंस वो है नहीं, तो बी वाला जवाब आपका ठीक है. Mention the name of the school of the poets who seek escape from the hard realities of life in a word, or romance and beauty. Classical, metaphysic, physical या romantic. Romantic poets जो हैं वो जो है इस कैटेगरी में आते हैं. Beauty is truth, truth is beauty. That's all you need to know on earth. Identify the ode of Keats. किस ओड में ये इसने कहा था? Ode on a Grecian earth, ode to nightingale, or ode to autumn. Ode on a Grecian urn में इसने कहा था. What is the term used by Keats to describe the qualities of selfless receptiveness necessary to a true poet? Objectivity, negative capability, escapism या Hellenism? B वाला जवाब ठीक है. John Keats is a romantic poet famous for his negative capability, escapism, Hellenism या तमाम. नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जो है वो जॉन कीट्स मशहूर है. जॉन कीट्स डाइड इन द एज ऑफ 25, 26, 27, 28. तो कहीं पे आपको 25, कहीं पे आपको 26 जो है जवाब मिलेगा. तो हमने इंटरनेट से इसको देखा, इसको वेरीफाई किया, कुछ किताबों में इसको देखा, मैंने इसको वेरीफाई किया और जवाब मिला जनाब 25 साल की उम्र में इसकी डेथ हुई. The Victorian age is so long and complicated that for the sake of convenience it is often divided into two periods, 1 period, 3 period. तो सही जवाब आपका है 2 period. फिर उसके बाद है जी the earlier period which was the period of middle class supremacy and of the unrestricted competition extended from 1830 to 1870, 1840, 1890, 850 to 1900. तो सही जवाब आपके पास है ए. उसके बाद जी टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, Carlyle, Ruskin, Dickinson, Thackeray were the prominent writers of the early Victorian age, later Victorian age, or both. तो सही जवाब आपके पास इसका है जी अर्ली विक्टोरियन एज. फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है Rothschild, Swinburne, Morris, George Eliot, Meredith, Newman and Pater were the writer of dash. ऑलराइट, देखते हैं जनाब अर्ली विक्टोरियन एज, लेटर विक्टोरियन एज, और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी बोथ. तो सही जवाब इसका है जी लेटर विक्टोरियन एज.
फिर है जी फेथ इन द रियलिटी, faith in the reality of progress was the main characters of main characteristics of कौन सी एज के, अर्ली विक्टोरियन, लेटर विक्टोरियन या दोनों के, तो अर्ली विक्टोरियन एज के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी डाउट, स्केप्टिसिज्म एंड क्वेश्चनिंग वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जवाब है अर्ली विक्टोरियन एज, लेटर विक्टोरियन एज या बोथ, तो जवाब आपके लेटर विक्टोरियन एज। In the Victorian age, in the Victorian age, in the Victorian, there was a conflict between science and religion, doubt and faith, materialism and spirituality. तो सही जवाब आपका है डी। Alfred Tennyson, Matthew Arnold, Elizabeth Barrett were the contemporary poets of T.S. Eliot, Browning, Byron and Keats. The right answer we have is Browning. अब ड्रामा से कुछ MCQs हैं, ये ड्रामा का पार्ट 1 है और फिर ड्रामा का पार्ट 2 भी। व्हाट इज एडिपस ट्रैक्स, ये ड्रामा है, पोइट्री है, ऐसे है या नावल है? ड्रामा है जी, बिल्कुल ड्रामा है। एडिपस ट्रैक्स ये किस किस्म का ड्रामा है? ट्रेजेडी है, मेलोड्रामा है या कॉमेडी है? ये ट्रेजेडी है जी। एडिपस ट्रैक्स का जो हीरो है वो कौन है? ऑरेस्टस, टेरेसियस, एडिपस या क्रियन? एडिपस इसका हीरो है जनाब। एडिपस, ऑरेस्टस, Agamemnon and Ajan are the some of the well-known heroes of modern plays, romantic poems, Greek tragedies या Shakespearean plays। Greek tragedies के ये मशहूर हीरो हैं। The perfect definition of tragedy was given by Plato, Aristotle, Eliot और Shakespeare। एरिस्टोटल ने जबरदस्त डेफिनेशन दी थी। Cleopatra, Electra, Iphigenia, Jocasta and Antigone are the few famous heroines of Shakespearean tragedies, Greek plays, modern plays या comedy of manners। Greek plays की ये मशहूर heroines हैं। What are the three eminent Greek playwrights? Shakespeare, Dryden, Marlowe, G.B. Shaw, Samuel Beckett and Henry Ibsen। Aeschylus, Sophocles and Euripides। तो सही जवाब आपका C। Chorus was considered essential feature of tragedy in Greek plays, modern plays, comedies। तो सही जवाब आपके पास है A। Which meter was almost the exclusive vehicle for the choral report? Iambic tetrameter, iambic pentameter, iambic hexameter। सही जवाब आपके पास है A। अब ड्रामा का पार्ट 2 से कुछ MCQs हैं। The two important dramatists who took a predominant part in the revival of drama in the last decade of the 19th century, G.B. Shaw and Oscar Wilde, Galsworthy and G.B. Shaw and Galsworthy। तो सही जवाब आपके पास है A। G.B. Shaw and Oscar Wilde belonged to England, Ireland और फ्रांस। इनका ताल्लुक आयरलैंड से था। Shaw was the greatest practitioner of the comedy of ideas, comedy of manners या दोनों का या किसी का नहीं। comedy of ideas का ये greatest practitioner था। G.B. Shaw को ही comedy of ideas का father भी माना जाता है। और comedy of manners किसको कहा जाता है? comedy of manners के लिए मशहूर है जनाब ऑस्कर वाइल्ड। G.B. Shaw was born in 1856, 1858, 1850। 1856 में G.B. Shaw साहब, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है इनकी बर्थ हुई थी। Who was influenced by Ibsen, Henrik Ibsen? G.B. Shaw, Oscar Wilde, W.B. William Butler Yeats या क्रिस्टोफर मार्लो? G.B. Shaw जो है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो हेनरिक इब्सन से बहुत जो है मुतासिर थे। Which are the foreign influences on modern English drama? Scandinavian influence, French influence, the Russian influence or all of these? ये सारे ही जो है फॉरेन इन्फ्लुएंस इंग्लिश ड्रामा पर, ये सारे ही इन्होंने जो है बड़ा इम्प्रेस किया इसको। Point out the name of the dramatist who is called
iconoclast और demolition expert, G.B. Shaw, Ibsen, W.B. Yeats और ऑस्कर वाइल्ड। G.B. Shaw जो है वो मशहूर है। Who wrote the Closes in 1960? ये नावल का नाम है। चिनुआ चीबी, टॉनी मॉरिसन, सलमान अहमद रुश्दी और सिल्विया प्लाथ। तो सही जवाब है सिल्विया प्लाथ। Thanks for listening and watching attentively. Subscribe if you have liked the content. Hope to see you all again in next video. अगली वीडियो जो है वो इसके पार्ट 2 पे बनाऊंगा। ये 50 MCQs जो है वो आपके लिए बनाए हैं मैंने। जो पहला पोर्शन था, जो पहले 50 इम्पोर्टेंट MCQs थे जो कि पेपर में आए थे, वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए। पार्ट 2 में इसके बाकी 50 MCQs शेयर करूँगा और इंशाल्लाह वो भी आप सारे जो है बहुत जल्द देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इफ यू हैव लाइक द कंटेंट। थैंक यू वंस अगेन and hope to see you all again in next video and next lecture. Thank you. Allah Hafiz.